have 5 minutes. 5 मिनट के बाद फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। क्या? Which paragraph? बच्चे लिटरल मीनिंग पहली बात तो पोएम में सब होगा, मतलब दूसरी बात यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है वो मैं बता देती हूँ। डार्कलिंग जो है वो वर्ड यूज हुआ है नाइट, अब अंधेरा हो चुका है एंड शी इज वेरी डियर बिकॉज वो उनका गाना सुनते जा रहे हैं। तो डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मेनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद पीसफुल डेथ, यानी कि उन्होंने ये पोइट्रीज जो हैं, उन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी हैं डेथ पर। उन्होंने बहुत सारी आप कह सकते हैं रेफरेंसेस दिए हैं अपने पोइट्री लाइफ में। डेथ को उसका अलग अलग नाम दिया है, उसको अलग अलग उसके बारे में बातें की हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पर उसे जब नाइटिंगेल का वो गाना सुन रहे हैं तो डेथ सबसे ज्यादा रिच लग रही है उनके लिए, क्योंकि वो एक्चुअल में बिलीव कर रहे हैं कि अब वो हैप्पीनेस से उसका गाना सुनते सुनते जा सकते हैं। ठीक है, हाफ इन लव मतलब मैंने जो पोइट्री लिखी उसमें मैंने इतनी सारी बातें कही हैं डेथ से कि अब वो बहुत अच्छी लगने लगी मुझे। मतलब लगता है ऐसा कि डेथ मेरा हाफ लव हो गया। ठीक है, मतलब मुझे जिंदा रहने से ज्यादा पसंद है कि मैं डेथ के साथ। हाँ, रिच टू डाई मतलब अभी जो वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुन रहे हैं इससे बेहतर टाइम उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा है जहां पर वो खुशी खुशी डेथ कर सकते हैं। यस, एनी अदर डाउट्स? एक लाइन में हाँ बिल्कुल रहता है बच्चे, हर एक लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ समरी पूछना कोई डाउट नहीं होता है आपको, अगर लाइन में नहीं समझना है तो यस। थीम ऑफ द पोएम इज नॉट अ डाउट, वो क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर लेंगे। आप पहले यहाँ पर एनालिसिस में जो डाउट है वो पूछिए, अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चन करूंगी। कैसे समझ में आएगा? Yes. Now it's time for your question. Yes, raise your hand if you can tell me why does the poet is intoxicated? Why does he say that he is intoxicated? Raise your hand. बिना raise किए अगर बोला तो valid नहीं होगा। Why does the poet say he is intoxicated? Yes. सब सेम ही होता है, एक भी वर्ड अलग नहीं बोलता है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं आप लोग? Yes, green शर्ट, खड़े हो जाइए। हाँ, नहीं
नहीं नहीं, आप खड़े हो जाइए, क्वेश्चन वो अटेंडेंस बाद में बन जाएगा, कोई तुम गायब नहीं हो जाओगे 1 मिनट में। यस, मुझे ये बताइए यहाँ पर ओपीएम का रेफरेंस क्यों दिया गया है? ओपीएम का रेफरेंस क्यों दिया गया है पोएम में? नहीं मालूम, ठीक है। मुझे ये बताइए व्हाई इज ही कंपेयरिंग द नाइटिंगेल सॉन्ग टू अ वाइन? तो वाइन से नाइटिंगेल का सॉन्ग क्यों कंपेयर कर रहे हैं? नहीं याद है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो है यहाँ पर बोला गया है कि चैरेट नहीं चाहिए, कहाँ जाने? लाइन देखना पड़ेगा, लाइन देखो, पैराग्राफ 4। He has said that we does not need a chariot of beggars and his parents. तो नहीं चाहिए उन्हें chariot। चलो एक आसान क्वेश्चन, नेम द फ्लावर्स इन द पोएम्स दैट आर मेंशन्ड। नेम ऑल द फ्लावर्स दैट आर मेंशन्ड इन द पोएम। तो पोएम में मेंशन किए गए हैं सभी फ्लावर्स का नाम। बैठ जाओ। यस, हाँ, यस, नेम ऑल द फ्लावर्स। तो फ्लावर्स मेंशन किए गए हैं, फूलों के नाम मेंशन किए गए हैं आपके पोएम में, उनका नाम बताओ। अच्छा, और कुछ नहीं मेंशन किया गया, यही है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड? मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड लाइन यूज हुई है कोई? नहीं यार, ठीक। यस, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरलून? फॉरलून, फॉरलून, फॉरलून का क्या मतलब है? यस, यस। तो आपके कान खराब है तो उसके लिए क्या कर बताओ? फॉरलून और क्या बोल? अरे फॉरलून क्यों पढ़ाऊंगी मैं यहाँ पर बेअक्ल? तुम फॉर लूप पढ़ो, वाइल लूप पढ़ो, डू वाइल लूप पढ़ो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? यस, बच्चे तुम जो पढ़ रहे हो ना वो मैं पढ़ के खत्म कर, ठीक है? तो अपनी नॉलेज अपने तक कर। यस, हाँ, हाँ, अच्छा, यस। पोएम, पोएट ने क्वीन मून को किससे कंपेयर किया? क्वीन मून को किससे कंपेयर? एक पोएट, पोएम तो कम से कम सामने रखो, तो पोएम भी नहीं रखते हो, इसीलिए ध्यान नहीं रहता है, और इसीलिए तुम लोग का ना क्वेश्चन होता है ना आंसर होता है ना समरी होता है, सब हवा में चल रहा है तुम्हारा। Yes, start writing. आपका जो poetry है, that is starting from the poet is trying to tell that he had some sadness in his life. He was having a heartache, that means he was feeling sad, he was feeling down, and after listening to the song of night, no, I will not stop. Continue writing. After listening to the song of the nightingale, he felt that he has allowed enough to make start writing. जहाँ से start writing, जहाँ से बोल रहे हैं वहीं से start writing.
I will start in 3 seconds. उसके बाद एक बार भी रिपीट नहीं करूंगी। अंकित लिखना स्टार्ट करो। तुम्हारी कॉपी में बिना चेक किए तुम्हारा अटेंडेंस पूरा मंथ का काट दूंगी। अभी तक रीअफेंड नहीं किया है। नहीं, कॉपी नहीं दिखाना, अभी लिखो। Yes. The poet is starting with the poem. He's saying that he has a heartache and he that he's feeling some drowsy numbness. Since the drowsy numbness is overcoming his body, he felt that he नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको डिक्टेट नहीं करा दूंगा, आपको लिखना है। तो बहुत काम हो रहा है, ये प्रॉब्लम कम काम हो रहा है, ये प्रॉब्लम पूरे काम आज की अगर नहीं लिखना है तो चुपचाप बैठो। मैं बोलती हूँ अगर क्या कर सकते हैं। Yes, he has been feeling the drowsy numbness and that felt like he has been drinking opium, dull opium, which means that it is diluted by water. He has been drinking like a hemlock, which is a plant that is poisonous, and that drowsy numbness is contained. After a while, he feels like he has forgotten his lifelong all the memories, which felt like he has taken the water from Leith River, which is a reference from Greek culture mythology, from which if you drink the water, it felt like you have been lost your whole memory. After that, he is justifying his behavior to the nightingale that he is feeling happiness and he is not jealous of the happiness of the nightingale. He says that the nightingale, he is comparing the nightingale to a fire which lives on the tree, and he is saying that whenever the nightingale sings, that thoughts become melodious, and the melodious thought is referred to as the forest that is contained by the beeching trees, that is the beech trees, and that full forest is joyous and happiest thought because of the nightingale song that is reference to the summer song of the happiness that you feel of the summer. ये आपका पहला पैराग्राफ है। Yes. टाइम वाला से नहीं होगा। लिखो सब कोई। Paragraph number 2. The poet is starting to compare the song of the nightingale with the vintage wine that has been stored in the cellar for a long time, and that cellar, because it has stored for so far now, that contains a very sweet taste, very good texture, which is compared from the song of the nightingale. He is saying that he is intoxicated like he has taken that wine. He is comparing the taste from the flora, that is the different wines that is produced by the different grapes, and he is saying that different means that are available in the summer due to the dance that he feels the happiness, due to the provincial song he had heard, and the summer mode, that means the happiness comes from the sun bath, is compared to the happiness of the nightingale song. After that, he says that he is feeling like he is in a paradise place, the place that is referenced from the Greek mythology, which is called Enquiry. It is a spring where it is said to be on the top of a mountain, which is a sacred place for the muses. He is saying that he is contained to that sacred place. He has been thinking of that sacred place because he is listening to the song of the nightingale. And after that, he is comparing the wine with the bubbles that is appearing on the top of the wine glass. He is comparing that movement to the reflection of the nightingale after the sunlight hits from between the leaves. And he is comparing that the stain that comes from the mouth when you drink the Coastal wine, that is a very rich wine, is the same stain that is contained in your soul when you listen to the nightingale song. And that is how happy he is after listening to the song of the nightingale. And he is so happy
Paragraph 3. He wants to fade away and gets dissolved into the world of the nightingale, and he wants to leave the world and go into the world of the nightingale where all the sadness, all the bad feelings, all the stress is not present there. The nightingale does not know all these feelings that is a regular occurrence in the human world. He says that the nightingale, he's telling the nightingale that the human world contains only weariness, only the feeling of restlessness, only the feeling of obsession of having the different possessions in their life. They hear each other complain all the time. They sit together and complain all the things that are happening in their life. They grew pale, that means after progressing, after having so many possessions, even then they die with despair and regrets in their eyes and heart. And they only see the beauty of the outer world and they don't see the beauty from the soul, which will never be dissolved. They only see the beauty that will dissolve in a few days and then they will move back to the next position. Paragraph 4. पैराग्राफ 4 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, वहां से मैं बता रही हूँ. नहीं, पैराग्राफ 4 is starting that he wants to. Paragraph 4 is starting. He wants to tell that he wants to fly away with the nightingale because she's a bird, and he also wants to fly away with the nightingale. But to fly away with the nightingale, he does not need the chariot of Pegasus, that is a ball of wine. And he does not need some help from the guard of the wine. He only needs the poetry that he has been writing, the viewless poetry that will give him wings to fly away with the nightingale. And after he has mentioned that, he mentions that in a physical way, he might not be with the nightingale, but on a mental level, he is with the nightingale. He has entered the world of the nightingale through a mental helping. After that, he says that the darkness is coming upon and the queen, that is the moon, is in the sky. She has taken her throne. And just as the moon is surrounded by the cluster of stars, our nightingale is now stuck in between the cluster of the leaves. And you cannot see her because there is no light penetrating light right now between the leaves. Only a few wind that is blowing because of the command of the god. You can have a few visibility because of the wind blowing and the light coming from the moon that is very low, and still you can see the path that you want to go. Yes, paragraph 5th. After the darkness has come upon, he cannot see the flowers that are at his feet. He cannot see the flowers that are on the tree, the main branch of the tree. But because of his sense of the smell, that is the fragrance of the flower, also the knowledge of the summer season or whatever the season that is coming upon, he can guess all the flowers that exist near or in the forest. That is, he mentions that there must be grass, there must be bushes, there must be trees that have fruits on it, there must be hawthorns that are in white color, there must be eglantine that has long pistils, there must be violets that must be changing color and are protected by the leaves, there must be roses from which rich fragrance he is getting. He can say that there are roses, and because the night is falling, the dew is also falling and is collected on the petals of the rose, which is described by the dewy one in the poem. He says because of the summer season, this all beautiful flowers have been present in the garden, and the murmurs of the flies, that is the insects at the night, are starting to sing along with the nightingale. Next, 6th paragraph. After a while, he thinks that he has been writing poetry for a long time. He has been writing poetry about death. He has been describing death through various names
He have been describing death in his poetry on a regular interval, but right now when he's listening to the song of Nightingale, he thinks that this uh, time when he dies, there will be no pain, there will be no despair, there will be no regrets in his heart or eyes, and he will die in happiness because he's listening to the song of the nightingale. And still, after his death, the nightingale will have no effect on because of the death of poet, and she will keep singing, but her song will go vain because the poet is not there to listen to the song. Seventh paragraph. After he has explained about the death and he has expressed this view that he might die happily in the presence of the nightingale, he expresses that the nightingale is an immortal bird because she has not been affected due to the interference of humans. Humans have not interfered in her life cycle, and she is going to be immortal because once generation after generation, people have been listening, the kings and their crowns have been listening to the song of the nightingale, just as the poet is listening to her right now. And Ruth, who is from a story, who is from the mythological story, also have heard the nightingale's song and related the sadness that she is feeling alone in the alien cornfield and wishing that she could go home. She can relate to the sadness in the voice of the nightingale. Same here, he says that oftentimes he have been thinking that the song of the nightingale might take you to a fairy island, the island where everything is magical, the island where everything is beautiful, but you are alone there. The forlorn word that is used in the last line of the seventh paragraph referred to as extreme loneliness or being the alone one. That means you will be in a beautiful, magical land, but you will be alone there and there will be no one else to share your happiness that you will be feeling in that presence. The forlorn word, when he wrote that in the seventh paragraph, that word was alone to wake him from the intoxication that he was feeling from the song of the nightingale. After that, he mentally got back to the present state. That means he realizes that he has been mesmerized by the song of the nightingale, and now he has he has come back to reality, and now he's saying goodbye to the nightingale and saying that I'm not that kind of creature who will be cheated or who will be deceived by the nightingale's beautiful song, just like the elves have. But the nightingales can keep singing the anthem of plenty, and it will fade away because I have left that land and gone far away and stored that memory of that happiness, of that feeling in a very far away land and buried it on the top of a mountain where it could never come back to me. Now he is thinking, he is questioning to himself whether he has actually gone through all the roller coaster of emotions from happiness to sadness to death, to speaking of death, whether it was a dream or whether he actually felt all these things. ठीक है, अब इसको आप जिस फॉर्म में अपने पास रखना चाहें, अपने से लिखना चाहें, जब ना याद रहे इसी फॉर्म में लिखिएगा. अगर कुछ छूट रहा है, अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन गिव दैट. ठीक है, एनालिसिस जब आप लिखिएगा, टेक इन माइंड, अगर आप गूगल से सर्च करके लिखोगे एनालिसिस तो बहुत सारी एल्जेब्रा एनालिसिस नहीं होगा. तो बेसिकली आपको समरी देगा है, दैट मींस द ओवरव्यू ऑफ द पैराग्राफ. एक पैराग्राफ को ओवरव्यू देगा, ना कि एक लाइन का एनालिसिस. एक लाइन का इसीलिए जरूरी है कि आपको कई बार क्वेश्चन आते हैं. चार लाइन के पोएम के वो आपको उठा के लिख लिए जाएंगे और उसके बाद पूछा जाएगा ऑफ दिस पोएम.
meaning of the poem या meaning of the lines जब आप लिखते हैं, always remember when you are answering this type of question, आपको priorly mention करना होगा. First of all, these lines are taken from the poem Those of the Nightingale that was written from John Keats. ये line mention करनी है. Second, the poet has been intoxicated. For example, अगर आपको second paragraph का 4 लाइन दे दिया गया, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये पोएम का एक पैटर्न, हर पैराग्राफ का लास्ट 2 लाइन अगले पैराग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको वो लास्ट 2 लाइन से लेकर उस पैराग्राफ का एनालिसिस लिखना है. अंडरस्टूड? यस, पिछले के 2 लाइन के बारे में बताना होगा, उसके बाद आप आगे वाले पैराग्राफ के बारे में लिख सकते हैं, बिकॉज़ देयर हैज बीन मेंशन टू द प्रायर इन द पैराग्राफ. पहले वाले पैराग्राफ में कुछ चीजें मेंशन की गई हैं. ऑल्सो अगर आपको लास्ट पैराग्राफ भी देता है तो भी आपको 4 लाइनों में बताना कि शुरुआत कहां से, ठीक है? 4 लाइनों में ये चीज बताना है कि ये क्वेश्चन जब आता है तो ये लिखने का, ये कम से कम 5 से 6 नंबर का आता है, तो 5 से 6 नंबर में आपसे 4 लाइन आपको 4-5 लाइनें आगे के बारे में बताना है. अंडरस्टूड? Reference to the scenery that we see. Can we see the nightingale? देख रहे हैं कि nightingale जो है पत्तों पे जिससे सूरज की रोशनी आ रही है वो रिफ्लेक्ट कर रही है nightingale के ऊपर पड़ रही है. nightingale एक तरह से बात कर रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है उस लाइन पे. इसको कंपेयर किया गया है when there is bubble, when you are pouring the wine on glass, there is bubbles around and that will because of the sunlight. पर्पल स्टील माउथ जो है आपका वाइन जितना डार्क हो उतना अच्छा और उतना क्लीन लग जाता है, बिकॉज़ इट हैज कलर इन इट. ये वो कलरिंग एजेंट होता है, ठीक है? उसी तरह वो डार्क जो आपको लग जाता है, वही गाना बनाई से गाना वही एक मार्क जो है आपके सोल पे करता है, ठीक है? लिसन टू द नाइटिंगेल सॉन्ग. यस, एनी मोर डाउट? नहीं, आगे तो नहीं बढ़ेंगे. अब ये चैप्टर जो है ये क्लोज हो गया. अब नेक्स्ट क्लास आपका मार्किंग होगा. मेरे बोलने से पहले ही तुम्हारे डाउट क्यों हो जाते हैं? 1000 बार समझाया, पहले मेरी पूरी बात को सुन लिया करो. मार्किंग होगा दैट इज फॉर द अप्रैल. आपका मार्किंग होगा चैप्टर्स दैट आर इंक्लूडेड फॉर द क्वेश्चन इज द कंट्री ऑफ द काइंड, God's stranger and great great. The country of the blind, God's stranger, God's stranger and great great great. God's stranger नहीं हुआ. God's stranger नहीं हुआ. Okay, then write down the chapters: the country of the blind, the postmaster, and great great great. The country of the blind, the postmaster, and great great great. Written over. Next class. आपको 2 दिन ऑलरेडी मिल रहा है. आज से प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे 2 दिन हो जाए. हाँ, कॉपी मेरे पास है, तो कॉपी से थोड़ी प्रिपेयर करना. चैप्टर पढ़ के आओ, चैप्टर पढ़ के आना ना तुम्हें. क्वेश्चंस मैंने जो लिखवाए हैं वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो डोंट वरी. हाँ, आपको चैप्टर मैंने एनालिसिस के साथ देख 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 के एनालिसिस अगर नहीं भी किया है तो वो जो चैप्टर है वो आपके पास है, ठीक है? एनालिसिस नहीं पूछूंगी, लाइन का बस मीनिंग पूछूंगी.
वर्ड मीनिंग पूछूंगी, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस आपको कंट्री ऑफ द ब्लाइंड से और पोस्ट मास्टर से आएंगे। पोस्ट मास्टर का पीडीएफ आपके पास है, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड का पीडीएफ आपके पास है। पढ़ लो। पोस्ट मास्टर इसलिए इंक्लूड कर दिया गया है, वो चैप्टर 2 बार पढ़ाया गया है फर्स्ट बैच में, तो उससे अगर आंसर नहीं आया मैं आपसे दोनों